Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are discussing chapter 5th of class 10th. Arithmetic progressions is the topic's name, and we are discussing NCERT exercise 5.3 up to question number 17th we have done. And now we are proceeding with our question 18th. The question is, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in figure, and so on. As shown in figure, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles taking pi is equal to 22/7. So first of all, let me tell you that this is the spiral. This semicircle length we have to calculate by taking center as A. पहले A सेंटर है, ये सेमीसर्कल का सरकमफरेंस निकालेंगे, वो लेंथ ऑफ स्पाइरल के लिए लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमीसर्कल हो जाएगी. सेकंड सेमीसर्कल जो बना है वो नीचे ऐसे बना है, इसमें सेंटर B लेकर के इसको बनाया गया है. इसके बाद में फिर A को सेंटर लेकर के ये सेमीसर्कल बनाया गया है, फिर B को सेंटर लेकर के ये वाला सेमीसर्कल बनाया गया, और इसी टाइप से आगे भी बनाते गए. कब तक? जब तक कि 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स सेमीसर्कल्स नहीं बने तब तक. तो हमको इसकी टोटल लेंथ निकालनी है इस स्पाइरल की. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में मेंशन करेंगे कि लेट द लेंथ of semicircles be L1, L2, L3 and so on. Taking AB as center. Therefore, L1 is equal to pi r. Why is it pi r? Because circumference of semicircle is equal to pi r. अगर सर्कल का सरकमफरेंस लेते हैं तो क्या लेते हैं हम? 2 पाई आर. तो यहाँ हम किसका सरकमफरेंस ले रहे हैं? सेमी सर्कल का. तो वो सर्कल के सरकमफरेंस का हाफ रहेगा, मतलब 2 पाई आर को हम हाफ से डिवाइड करें, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. मीन्स पाई आर जो है वो सेमी सर्कल का सरकमफरेंस होता है, तो इसलिए इसको पाई आर लिया. तो पाई r1, तो इसका रेडियस 1 जो है वो हमारे पास 0.5 है. अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं r1 इज इक्वल टू 0.5, r2 इज इक्वल टू 1, r3 इज इक्वल टू 1.5. ये सब सेंटीमीटर में दे रखी हैं. तो इसी टाइप से कॉन्जिक्यूटिवली ये r4 जो है ये 2 सेंटीमीटर है. तो ये सब रेडियस है. L1 निकालेंगे तो पाई r1 लिखेंगे. मीन्स L1 इज इक्वल टू पाई इंटू 0.5, that is equal to, if we remove the decimal then 0 will be there because after decimal 1 place is there. So pi into 5/10, that is equal to pi by 2. This is pi by 2. Now L2 is equal to pi r2, that is equal to pi into 1, that is equal to pi, and L3 is equal to pi r3, that is equal to pi into 1.5. Means if we remove decimal then 10 will be the denominator, so it will be pi into 15/10. 5 3s are 15, 5 2s are 10, so it is 3 pi by 2.
So now what is our AP? AP will be then AP हमारा जो AP होगा वो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 कॉमा पाई कॉमा 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालें तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेट अस सी हियर a इज इक्वल टू पाई बाय 2, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2। जब पाई में से पाई बाय 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा, मीन्स पाई बाय 2 अगेन। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें पाई बाय 2 का डिफरेंस है, देखिए आप पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस पाई बाय 2 हो गया। फर्स्ट टर्म जो है वो पाई बाय 2 है, कॉमन डिफरेंस भी पाई बाय 2 है, और इसके साथ में n की वैल्यू हमको दे रखी है, टोटल कितने 13 सेमी सर्कल है, तो n की वैल्यू 13 है। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल is equal to sum of 13 terms. So Sn is equal to what? Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for sum of n terms. Now we may write here it is the applied formula. Now we may proceed by taking the value of a, n and d here. In this formula we have to put these values, then we can get our answer. So now see what will happen. Sum of 13 terms is equal to 13 by 2. 2a means 2 into pi by 2. Because value of a is pi by 2, so this 2 will be cancelled, plus n minus 1 means 13 minus 1, common difference is again pi by 2, so this will be equal to 13 by 2 into pi plus 12 pi by 2, so 2 6 are 12, so pi plus 6 pi means 13 by 2 into 7 pi. Now 13 by 2 into 7 into 22 by 7, because value of pi is given there, what we have to put here 22 by 7, so this 7 will be cancelled, ये 7 cancel हो जाएगा और ये 2 के टेबल में 11 टाइम्स में 22 आएगा, so 11 3 is 33 and 11 1 is 11 and 3 14, 143 centimeter is the total length of spiral. This is our answer. So now this question number 18 is over. Now see students, it is question number 19th of exercise 5.3. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. See 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And after that, from next to bottom there are 18 logs, and from second next to bottom there are 18 logs, means 20, 19, 18, in such a manner they are placed. So in how many rows are the 200 logs placed and how many logs in the top row? So we have to find the first term of that arithmetic progression and we have to find the value of n of the arithmetic progression. What is the arithmetic progression here? Solution will be like this. In bottom there are 20 logs, in next to the bottom 19, and second next to the bottom 18,
and so on. In such a manner AP is formed. So here AP is in such a manner. So A means first term is 20 and common difference that will be equal to 19 minus 20 means it is minus 1. So now what we have to find? We have to find value of n first of all. So for that sum of n terms they have given already, because they have given number of logs there. How many logs placed in total? So in total 200 logs are placed, which is mentioned in the question. 200 logs are stacked in the following manner. So sum of n terms is equal to 200. Here we have to find the value of n. So sum of n terms formula will be n by 2, 2a plus n minus 1 into d is equal to 200. Now what we have to do? N we have to find. We know the value of a and d here. So it will be n by 2. 2 into a means 2 into 20 plus n minus 1. Value of d is minus 1. And with this 200 is also there in equal to. Now this 2 is multiplied in RHS. So it will be n into 40 minus n plus 1, like this. See, n into minus 1 is minus n, and minus 1 into minus 1 will be plus 1, and here it is 200 into 2. So now 40 plus 1 is 41. So n into 41 minus n is equal to 400. Now it will become n is equal to 41n minus n square minus 400 is equal to 0. We have considered A as the last bottom row number of logs. Bottom row number of logs we have considered A, means here a n will be that particular value which we should have to find, because and how many logs in the top row is also asked. So here minus sign is taken common, n square minus 41n plus 400. See, we have taken minus sign common here. So if we take minus sign common, then this n square will become positive, this 41n will become negative, and that 400 will become positive. Now this minus sign is shifted from LHS to RHS. So minus 0 will be 0 only. So the quadratic equation is n square minus 41n plus 400 is equal to 0. Now what we have to bring? This 41 in summation means addition उसका जो होगा वो 41 लाना है आपको, और मल्टीप्लिकेशन 400 लाना है. तो इसके लिए हम इसके फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स को फाइंड करने के बाद में हमको पता चलेगा कि इसके फैक्टराइजेशन से n की क्या क्या वैल्यू आ रही है. सो 2 2 4 0 0, 2 1 2 0 0, 2 5 10 0, 2 2 4 5, and 5 5 25, and here it is 5 1 5. Now see, 2 2 4, 4 5 20, and 4 5 20. 20 plus 20 is 40. It is not 41. Then what we have to do? See what we have done here. We have done minus multiplication of minus 1 here. So it will become minus n, and minus into minus will be positive 1 is equal to 200 into 2 means 400. So we can check again. 2 to the 4 to the 8 to the 16 and 25. 16 and 25, check. 25 plus 16, what it will be? 5 plus 6 11, and 2 plus 2, that is 4. Means we can do like this 25 and 16. So n square minus 25n minus 16n
plus 400 is equal to 0. Now check, n is taken common, n minus 25. Again negative sign is taken common. We can take common 4 from here. So if 4 is taken common, then it is possible. See, 16 we have to take common, because in table of 16 there will be in 25 times 400 will also be there, is equal to 0, because we have checked it na, 25 into 16 is equal to 400. So here n minus 25 is now taken common. So n minus 16 are the remaining terms from both the places, is equal to 0. So factors are n minus 25 and n minus 16. So we have to check which one is correct from it. Let us proceed it later. Now see, n minus 25 is equal to 0 means what? N is equal to 25, or n minus 16 is equal to 0. So n is equal to 16 means 0 plus 16, that is 16, and here it is 0 plus 25, that is 25. So which one is the correct answer? Here is the question for us. Now let us check which one is the correct answer. For this we have to find an. An is equal to a plus n minus 1 into d. A we know very well, this is a, and common difference is 19 minus 20, that is minus 1. So a and d value and value of n, it is well known to us. Now by two values of n we have to determine the value of an. So a25 is equal to, value of a is 20 plus n minus 1 means 25 minus 1 into d, that is minus 1. So a25 is equal to 20 plus 24 into minus 1, 25 minus 1, that is 24. 24 into minus 1 is minus 24. So a25 is equal to 20 minus 24. So a25 is equal to minus 4. Not possible. Means this value is not possible. Why is it so? Because जो टॉपमोस्ट इसकी रो होगी उसमें माइनस के 4 लॉग्स आएंगे. लॉग कभी माइनस में कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इसलिए इसमें लिख दिया नॉट पॉसिबल. अब नाउ सी n इज इक्वल टू 16. सो फॉर दिस a16 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज 20 प्लस n minus 1 means 16 minus 1 into common difference is minus 1. You know from starting we have determined the value of a and d there. So we can get a16 now, means topmost row, that is 20 plus 15 into minus 1. 15 into minus 1 is minus 15. So a16 is equal to 20 minus 15 means a16 is equal to 5. What it means कि टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे? टॉप रो में होंगे 5 लॉग्स. तो अब यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज मीन्स ये वाला सही आंसर है हमारा, क्योंकि ये हमने रॉन्ग बता दिया था. तो टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16 and number of logs placed in top row. इज इक्वल टू 5. ये दोनों हमारा आंसर होगा 16 और 5. मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी जिसमें हमने 200 लॉग्स को रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी 16, मीन्स 16 ऐसी रो होंगी जिसमें हमने लॉग्स को रखा है. और टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे? 5 लॉग्स होंगे. यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20. इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड at the starting point
See, here bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato. ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर है पहले पोटैटो से. ये पोटैटो रखे हुए हैं यहाँ पर 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट. और दूसरे पोटैटोज 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए इस पूरी रो में 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन. देयर आर 10 पोटैटोज. और इसमें टोटल कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज हैं इन द लाइन. अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट. एक कॉम्पिटिटर यहाँ बकेट से चलना शुरू करता है. स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो. सबसे पास वाले पोटैटो को उठाता है और उठा करके एंड पिक्स अप द फर्स्ट नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो. सी, a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it. मतलब वो जाता है, पोटैटो उठाता है, फिर बकेट में रखता है, फिर वापस यहाँ से जाता है, फिर दूसरा पोटैटो उठाता है, फिर बकेट में रखता है, फिर वापस जाता है, फिर तीसरा पोटैटो उठाता है और फिर ला करके बकेट में रखता है. तो वो ये 10 पोटैटोज पूरे उठा करके जब तक बकेट में नहीं रख देता उस टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमको ये फाइंड आउट करना है. सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल AP. AP will be, what is the AP here? 5 is first term, 5 plus 3 means 8, 5 plus 3 8. Now 8 plus 5 plus 3 8, 8 plus 3 11, 11 plus 3 14, like this. Okay, up to 10 terms. Up to 10 terms we have to go. Here up to 10 terms we have to go. So now A is equal to what? 5 is there and common difference is 11 minus 8, sorry 8 minus 5, that is 3. That is also given there in question only. See, 3 meter apart. So A is 5 and D is 3. No need to write meter here. Now N is equal to means total number of terms. How many potatoes are there? 10 potatoes are there. So 10 terms are there. So N is equal to 10. Now what we have to find? Sum of N terms. Sum of N terms is equal to N by 2. 2A plus N minus 1 into D. It is the applied formula. So this is only the applied formula. Now sum of 10 terms is equal to 10 by 2. Here it is 10 by 2. 2A means 2 into first term is 5 plus N minus 1 means 10 minus 1 into D, that D is 3, bracket closed. Now see, sum of 10 terms is equal to 10 by 2 means 2 5s are 10, so it will be 5, and after that in bracket 2 5s are 10 plus 9 into what it is 3, so 9 3s are 27. Now sum of 10 terms is equal to 5 and in bracket it will be 10 plus 27 because 9 3s are 27. Now we have to add 10 and 27, then it will be 37. So 5 into 37 means sum of 10 terms is equal to how much? It is equal to 5 7 are 35, 5 carry on 3 and 5 3 are 15 and 3 18 means 185 meter. So is this the correct answer? No, because जो कॉम्पिटिटर यहाँ से चलती है वो लेडी है या लड़की है तो वो यहाँ से चलती है, पहला पोटैटो उठाती है, फिर पोटैटो उठा करके बकेट में रखती है, फिर यहाँ से चलती है, फिर दूसरा पोटैटो उठाती है, फिर ला करके बकेट में रखती है. तो इस टाइप से उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये तो केवल यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन वो जब उठा करके ला करके वापस बकेट में रखती है मीन्स इसका हमको क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जा करके हमको इसका टोटल डिस्टेंस traveled by that competitor will be there. So total distance traveled
is equal to 2 into 185 meter is equal to 2 5 the 10, carry on 1, 2 8 the 16 and 1 17, carry on 1, 2 1 the 2 and 1 3. 370 meter is the total distance which is travelled by the competitor in a complete race. ये एक कॉम्पिटिटर को इस रेस को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है? 370. वाई नॉट 185? क्योंकि 185 तो केवल पोटैटो उठाने का है. हमने केवल सम ऑफ एन टर्म्स में वो लिखा था जो पोटैटो उठाए हैं उसने, लेकिन वहाँ से हर पोटैटो के बाद वो रिटर्न आ रही है. तो इट मीन्स कि हमको इस डिस्टेंस का 2 टाइम्स करना होगा. दैट्स वाई द आंसर इज 370 मीटर. So now this chapter number 5th is now over. It is the last question of this chapter, and thanks a lot for watching our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Please do study and like it, subscribe it and share it as much as possible.